Hello viewers, I am Muhammad Abdul Habib. Welcome you all to our application AIMS tutorial. In this video, we'll be discussing Unit 4, Chapter 5, Admission of a Partner, Practical Problems. Page number 244, question number 8. Ganga and Yamuna are partners sharing profits and losses in ratio of 3:2 respectively. Their balance sheet as on 31st March 2020 was as follows. यहाँ पे पहले से पार्टनर्स कौन कौन है? गंगा और यमुना है. Ganga and Yamuna, they are partners. And their balance sheet is given as liabilities amount rupees, assets amount rupees. The profit sharing ratio is 3:2. On the above date, they decided to admit Saraswati for 2/9 share in future profits, share in profits of the business. तो नया पार्टनर कौन है यहाँ पे? सरस्वती. The conditions of admission are Saraswati should bring rupees 50,000 as capital and 20,000 as goodwill. तो पहले से पार्टनर्स कौन कौन है? गंगा और यमुना. न्यू पार्टनर कौन है? सरस्वती. सरस्वती अपने साथ कितना कैपिटल लाना? 50,000. गुडविल कितना ला रहे? 20,000. लैंड एंड बिल्डिंग्स बी अप्रिशिएटेड बाय 20%, फर्नीचर बी depreciated by 5% and stock by 10%. There is an unrecorded investments valued at 3,000 to be brought into the books. गुडविल विल बी रिटेन इन दी बिजनेस. रिटेन का मतलब क्या? नया पार्टनर सरस्वती से जो गुडविल का अमाउंट आ रहा, दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ओल्ड पार्टनर्स. And after distributing, the amount of goodwill is retained in the business. Retain का मतलब जैसा 1 to 6 प्रॉब्लम्स करे थे हम, सिर्फ गुडविल का पैसा लाना है, बांट देना है. 7th प्रॉब्लम में क्या करे थे हम? गुडविल का पैसा लाए, पुराने पार्टनर्स में बांट दिए, फिर पुराने पार्टनर्स विथड्रॉ करे. तो ऐसा ये प्रॉब्लम में विथड्रॉ करना नहीं है. रिटेन इन द बिजनेस मतलब सिर्फ पैसे लाना है, बांटना है. New profit sharing ratio of Ganga, Yamuna and Saraswati is 4:3:2. Give general entries, ledger accounts and balance sheet of Ganga, Yamuna and Saraswati. So in this problem, we are required to give general entries, ledger accounts and balance sheet. So we'll be discussing only ledger accounts and balance sheet. After completing the chapter and after completing all the problems, then we'll be discussing how to prepare general entries. तो ये प्रॉब्लम में अपने को ओल्ड रेशियो भी दिया हुआ है, न्यू रेशियो भी दिया हुआ है. So in this problem, we'll be calculating sacrificing ratio and the amount of goodwill will be distributed in sacrificing ratio. हम अब तक जितने भी प्रॉब्लम डिस्कस करें उसमें ये डिस्कस करें, goodwill will be distributed to old partners in their sacrificing ratio. फिर साथ साथ ये भी बोले कि old ratio will be treated as sacrificing ratio. तो अब तक जो 1 to 7 प्रॉब्लम सॉल्व करे हम, उसमें कहीं भी sacrificing ratio मालूम नहीं करे. ओल्ड रेशियो जो भी दे रहा था उसको ही हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो समझ के बांटते गए. बट ये प्रॉब्लम में अपने को ओल्ड रेशियो भी दिया हुआ है, न्यू रेशियो भी दिया हुआ है. सो व्हेन बोथ ओल्ड एंड न्यू रेशियोज विल बी गिवन, विल बी कैलकुलेटिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो. सैक्रिफाइसिंग रेशियो यहाँ पे कैलकुलेशन है, देखिए. सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. तो सैक्रिफाइस कौन करते हैं? सिर्फ पुराने पार्टनर्स करते हैं. बिकॉज ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, ओल्ड पार्टनर्स विल बी फॉरगोइंग देयर शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स. मतलब अब तक जो भी प्रॉफिट्स बढ़ते थे वो पुराने पार्टनर्स में बढ़ते थे. नया पार्टनर आने के बाद क्या हो जाता? तीनों पार्टनर्स में बटेंगे, जिसकी वजह से पुराने पार्टनर्स का शेयर कम होता. तो ओल्ड पार्टनर्स विल बी सैक्रिफाइसिंग बिकॉज ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर. सो सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल बी कैलकुलेटेड ओनली फॉर ओल्ड पार्टनर्स. तो यहाँ पे पहले से पार्टनर्स कौन कौन है? गंगा और यमुना. न्यू पार्टनर कौन आ रहे? सरस्वती. सो सरस्वती की वजह से गंगा और यमुना का शेयर कम हो जाएगा. तो अब यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो किसका मालूम करेंगे? सिर्फ गंगा यमुना का, जिसका फार्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. सो फर्स्ट विल बी कैलकुलेटिंग इट फॉर गंगा. Old ratio of Ganga was 3/5. So here it will be recorded as 3 divided by 5 minus new ratio. New ratio of Ganga is 4 plus 3, 7, 7 plus 2, 9. It is 2/9. So 3/5 minus 2/9. So 3 9s are 27. 27 minus 5 2s are 10 divided by 5 9s are 45. So 27 minus 10, it is 3 9s are 27, 5 2s are 10. 27 minus 10, it is 17/45. 4 plus 3, 7, 7 plus 2, 9. Sorry, it is 4/9. Ganga, it is 4/9. So 3 9s are 27 minus 5 4s are 20. So 27 minus 20, it is
7/45. तो अब ये जो गंगा का सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसा मालूम करें हम, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर. द ओल्ड शेयर ऑफ गंगा वाज 3/5 एंड द न्यू शेयर ऑफ गंगा वाज 4/9. 4/9 कैसा आया, 4 + 3 7, 7 + 2 9. तो पहला नाम गंगा का है तो पहला शेयर गंगा का रहेगा, दूसरा नाम यमुना का है तो दूसरा शेयर यमुना का रहेगा, तीसरा नाम सरस्वती का है तो तीसरा शेयर सरस्वती का रहेगा. तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसा मालूम करें, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. ओल्ड रेशियो ऑफ गंगा वाज 3/5 minus new ratio of Ganga is 4/9. So cross multiplying it, 9 3s are 27 minus 5 4s are 20 divided by 5 9s are 45. 27 minus 27, 7/45. So Ganga का sacrificing ratio क्या है, 7/45. Now we'll be calculating sacrificing ratio for Yamuna. Applying the same formula, old ratio. Yamuna का old ratio क्या है, 2/5. It is 2 divided by 5 minus Yamuna का new ratio क्या है, 3/9. 3 divided by 9. So again cross multiplying it. 9 2s are 18 minus 5 3s are 15 divided by 5 9s are 45. So 18 minus 15, it is 3/45. So sacrificing ratio of Ganga is to Yamuna. Sacrificing ratio of Ganga is to Yamuna is equals to 7:3. तो ये जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो मालूम करें हम, ये सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल में काम आएगा. एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ओनली दिस रेशियो 7:3 विल बी यूजफुल. 7/10 3/10. सो व्हाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल, गुडविल का अमाउंट कितना है, 20,000. So 20,000 will be divided into 10 shares. 10 कैसा आया, 7 + 3 it becomes 10. Out of which 7 shares will belong to Ganga and 3 shares will belong to Yamuna. Other than distribution of goodwill, all other items such as revaluation, profit, old general reserves and old profits will be distributed to old partners in their old profit sharing ratio 3:2. तो ये प्रॉब्लम में जो ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो की मदद से हम जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो मालूम कर रहे हैं, ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो से सिर्फ हम गुडविल का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. Other than goodwill, all other items will be distributed among partners in their old profit sharing ratio. So now let us start the problem. तो ये तो सिर्फ वर्किंग नोट सी, जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो मालूम करे ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो से, ये जो 7:3 आया, ये सिर्फ गुडविल बांटने के लिए काम में आएगा. So first we'll be preparing revaluation account. How do we prepare revaluation account? Doing the total, how do we prepare revaluation account? The format for which is date particulars general folio amount rupees, date particulars general folio amount rupees. Towards extreme left will be writing DR debit, towards extreme right will be writing CR credit, and the name of the account is revaluation account. What are the rules for preparing revaluation account? Decrease in value of asset will be recorded on debit side, increase in value of asset will be recorded on credit side, increase in value of liability will be recorded on debit side, decrease in value of liability will be recorded on credit side. अब अपने को एडजस्टमेंट्स किस पे दिया हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग्स भी अप्रिशिएटेड बाय 20%. तो जमीन की वैल्यू क्या है, 20% बढ़ रही. द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग्स इज गिवन एज 45,000. 10% of 45,000 will be 4,500. 20% will be double of it, which will be 9,000. So as it is increase in value of asset, it will be recorded on credit side as by land and buildings 9,000 rupees. 45,000 into 20/100, which works out to be 9,000. In balance sheet, it will be shown as land and buildings 45,000 plus appreciation 9,000. It will become 54,000. तो बैलेंस शीट में कैसा बताएंगे, लैंड एंड बिल्डिंग्स 45,000 plus appreciation 20% 9,000, it becomes 54,000. Then after land and buildings, we have adjustment on furniture to be depreciated by 5%. Furniture की वैल्यू क्या है, 40,000. 10% of 40,000 is 4,000. 5% will be half of it, which is 2,000. So as it is decrease in value of asset, it will be recorded on debit side of revaluation account as to furniture account 40,000 into 500 2,000. This will be shown in balance sheet as furniture 40,000 minus depreciation 2,000. It becomes 38,000. तो अब इसको बैलेंस शीट में बताएंगे, furniture 40,000 minus depreciation 2,000. It becomes 38,000. Then again we are required to provide depreciation on stock at the rate 10%. The value of stock is given as 25,000. So 25,000 का 10% क्या होता, 2,500 हो जाता. 5 तो अपने को भी 10% depreciation देना है. So as it is decrease in value of asset, it will be recorded on debit side as to stock account 25,000 into 10/100 2,500. In balance sheet, it will be shown as stock 25,000 minus depreciation 2,500. It becomes 23,500. So here it will be shown as
stock 25,000 minus depreciation 10%, 2,500, it becomes 23,500. Then again we have an adjustment that there is an unrecorded investments valued at 3,000 to be brought in books. मतलब assets में जो है ना हम investments नहीं लिखे थे, अब लिखना है unrecorded investment, it is an asset to be brought into books, मतलब अब लिख लो. So as it is increase in asset, it will be recorded on credit side as buy investments 3,000 and this will be shown in new balance sheet as investments 3,000 on asset side. तो assets में बताएंगे हम investments. So इस तरफ बताएंगे assets में investments. So here we will be writing investments 3,000 rupees. Next. After this, we have completed all the items of adjustments with regards to assets and liabilities. तो अपने को जो भी adjustment थे assets पे थे, कुछ भी liability पे नहीं था. So now we'll be balancing revaluation account. How do we balance this? Doing the total on both the sides of revaluation. The total on credit side is 9 plus 3, 12,000, whereas the total on debit side is 2 plus 2, 4, 4,500. So the total on credit side is more than the total of debit side. So 12,000 will be recorded on debit side, 12,000 will be recorded on credit side. Subtracting 4,500 from 12,000. 12 minus 4, 8, 8 minus 500, 7,500. So we are earning a profit of 7,500, which will be transferred to Ganga and Yamuna in all profit sharing ratio. तो ये जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो मालूम करे, इसमें सिर्फ गुडविल बांटेंगे. अदर देन दिस रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट बांटते हैं वो ओल्ड रेशियो में बांटेंगे. क्या है वो? 3:2, मतलब 3/5 for Ganga, 2/5 for Yamuna. So that will be recorded as to profit transfer to Ganga capital account 7,500 into 3/5. So 5 1 5, 5 2 25, 1,200 into 5 1 5, 5 5 25, 1,500 into 3, it becomes 4,500. And for Yamuna, it is 1,500 into 2, 3,000 rupees. So revaluation profit is transferred to Ganga capital 4,500, Yamuna capital 3,000. After revaluation account, we'll be preparing cash account. The format for which is date particulars, JF general folio amount rupees, date particulars, JF general folio amount rupees. Towards extreme left, we'll be writing DR debit. Towards extreme right, we'll be writing CR credit, and the name of the account is cash account. So cash as it is an asset. Cash का amount अपने को question में क्या मिलता? Assets में मिलता. Cash is given as 12,000. So as it is an asset, it will have debit balance. It will be shown as to balance brought down 12,000. अब इसका मतलब क्या? यमुना, गंगा और यमुना पहले से पार्टनर्स थे, तो ये लोगों के पास 12,000 रुपए कैश बैलेंस है. कब? जिस दिन न्यू पार्टनर सरस्वती बिजनेस में आ रहे हैं. तो सरस्वती बिजनेस में आए सो दिन पुराने पार्टनर्स के पास कितना पैसा रखा हुआ है? 12,000 रखा हुआ है. अब सरस्वती अपने साथ दो अमाउंट लाएंगे, एक कैपिटल अमाउंट, एक गुडविल अमाउंट. So in question it is given as Saraswati should bring 50,000 as capital. So as cash is coming into the business, the rules for cash as debit what comes in. मतलब जो पैसा, the rules for cash is when cash is coming it should be recorded on debit side. तो अपने को पैसे आ रहे हैं, कैपिटल के नाम पे आ रहे हैं, गुडविल के नाम पे आ रहे हैं. So it will be shown on debit side as to Saraswati capital account 50,000 to goodwill account 20,000. अब इसका बैलेंसिंग करेंगे. न्यू पार्टनर सरस्वती आने से पहले गंगा और यमुना ओल्ड पार्टनर्स के पास कितने पैसे थे? 12,000 रुपए थे. अब सरस्वती आने के बाद 50,000 कैपिटल का पैसा आ रहा, 20,000 गुडविल का पैसा आ रहा. So now they have total cash 50 plus 20 70, 70 plus 10 80, 80 plus 2 82,000. So the total on debit side of cash account is 82,000. अब इसमें अपने को प्रॉब्लम में बोला क्या? गुडविल इज रिटेन इन द बिजनेस बोला, विथड्रॉ भी नहीं बोला, मतलब बिजनेस से कुछ पैसा नहीं जा रहा. तो हम इसका बैलेंसिंग कर दे सकते हैं. द टोटल ऑन डेबिट साइड इज 82,000 whereas द टोटल ऑन क्रेडिट साइड इज 0, क्योंकि बिजनेस से कुछ भी पैसा नहीं जा रहा. तब इन दोनों में कौन सा टोटल ज्यादा है? 82,000 ज्यादा है. सो ऑन बोथ द साइड्स विल बी राइटिंग द टोटल एज 82,000 82,000. नाउ इन ऑर्डर टू मेक इट इक्वल टू 82,000 it will be recorded as by balance carried down 82,000. The same will be recorded on opposite side as to balance brought down 82,000. Next, after preparing cash account, we'll be preparing goodwill account. The format for which will be date particulars general folio amount rupees, date particulars general folio amount rupees. Towards extreme left we'll be writing DR debit. Towards extreme right we'll be writing CR credit, and the name of the account is goodwill account. How do we prepare goodwill account? As we have recorded the name of goodwill in cash account, we'll be writing the name of cash in goodwill account. कैश के अकाउंट में गुडविल का नाम लिखे, गुडविल के अकाउंट में कैश का नाम लिखेंगे. इधर डेबिट में लिखे थे, इधर क्रेडिट में लिखेंगे. बाय कैश 20,000 लिखेंगे. अब ये जो गुडविल का पैसा है, हमेशा क्या करते थे? नया बंदा लाने के बाद पुराने लोगों में बांट देते थे. बट पुराने लोगों में कैसा बांटना? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटना. अब तक जितने भी प्रॉब्लम्स करे
उसमें हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड नहीं करें क्योंकि ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दोनों क्वेश्चन में स्पेसिफाई करा हुआ नहीं था। तो वैसी सूरत में हम क्या कर रहे थे, ओल्ड रेशियो को ही हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो समझ के calculations कर दे रहे थे. But in this problem both old ratio and new ratio are given and we have calculated sacrificing ratio which is 7:3, मतलब 7 by 10 for Ganga, 3 by 10 for Yamuna. So this amount of goodwill 20,000 will be distributed among Ganga and Yamuna in their sacrificing ratio 7 by 10 for Ganga, 3 by 10 for Yamuna. So 20,000 when divided into 10 shares, the value of each share will be for 2,000. As Ganga has 7 shares, Ganga will be getting 14,000 rupees, and as Yamuna has 3 shares, Yamuna will be getting 6,000, which will be recorded as to Ganga capital 14,000 to Yamuna capital 6,000, and the total on both the sides of goodwill account will be 14 plus 6, 20 on debit side, 20 on credit side. Now after preparing goodwill account, will be considering two items. One is general reserves and profit and loss account. If these names are given in the question, we'll be preparing these accounts. Otherwise, we are not going to prepare these accounts. So as in liability side of the balance sheet, it is given as general reserves. Now we'll be preparing general reserves account. The format for which will be date particulars general folio amount rupees, date particulars general folio amount rupees. Towards extreme left will be writing DR debit. Towards extreme right will be writing CR credit, and the name of the account is general reserves account. As it is a liability, all liabilities have credit balance. It will be recorded on credit side as by balance bar down 25,000. Who maintained the amount of general reserves? Old partners Ganga and Yamuna maintain the amount of general reserves in order to meet future contingencies. आगे फ्यूचर में कभी पैसों की जरूरत पड़ी तो यूज करने के लिए मेंटेन करें. So now at the time of admission of new partner Saraswati, the amount of general reserves will be closed by transferring it to old partners capital account Ganga and Yamuna in their old ratio. तो जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस करें, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा, सिर्फ गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगा. उसके अलावा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कैसा डिस्ट्रीब्यूट करें, ओल्ड रेशियो. फिर अब ये जनरल रिजर्व्स कैसा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड रेशियो में ही करेंगे. सो दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज 3/5 एंड 2/5. सो 25,000 के जब आप 5 हिस्से करते, एक हिस्सा 5,000 का आता. एज गंगा हैज 3 शेयर्स, she'll be getting a share of 15,000 rupees, and as Yamuna has 2 shares, she'll be getting a share of 10,000 rupees, which will be recorded as to Ganga capital 15,000 to Yamuna capital 10,000, and the total on both the sides of general reserves account will be 25,000, 25,000, 15 plus 10, 25, and here 25. Now after general reserves account, and as we don't have profit and loss in question, neither on liability side nor on asset side, then now we'll be continuing with partners capital account, the format for which will be particulars Ganga, Yamuna, Saraswati. Particulars Ganga amount rupees, Yamuna amount rupees, Saraswati amount rupees. Particulars Ganga amount rupees, Yamuna amount rupees, Saraswati amount rupees. Towards extreme left will be writing DR debit. Towards extreme right will be writing CR credit, and the name of the account will be taken as partners capital account. How do we start this? By balance brought down. Why? Capital is a liability and all liabilities have credit balance. On liability side, the capital balance of Ganga is given as 60,000 and on Yamuna it is given as 40,000. So this will be shown on credit side as by balance brought down 60,000 for Ganga, 40,000 for Yamuna. Similarly, we have recorded the name of Saraswati in cash account. कैश के अकाउंट में सरस्वती कैपिटल लिखे थे. अब सरस्वती कैपिटल में कैश लिखेंगे, इधर डेबिट में लिखे थे उधर क्रेडिट में लिखेंगे. बाय कैश अकाउंट 50,000 for Saraswati capital account. Then in goodwill account, we have recorded the name of Ganga and Yamuna. Now in Ganga and Yamuna capital, we'll be reading the name of goodwill. Here it was recorded on debit side. Here it will be recorded on credit side as by goodwill 14,000 for Ganga, 6,000 for Yamuna. Then we have distributed general reserves amount. In general reserves, we have recorded the name of Ganga and Yamuna. So now in Ganga and Yamuna capital, we'll be reading the name of general reserves. Here it was recorded on debit side. Here it will be recorded on credit side as by general reserves 15,000, 10,000. Similarly, in revaluation account, we have distributed the profit to Ganga capital and Yamuna capital. So in revaluation account, we have recorded the name of Ganga capital and Yamuna capital. So in Ganga capital and Yamuna capital, we will be writing the name of revaluation. Here it is recorded on debit side. There it will be recorded on credit side as by revaluation account 4,500 and 3,000 rupees. Now balancing the partners capital account. When Ganga and Yamuna have started the business, Ganga has invested 60,000, Yamuna has invested 40,000. So the capital account of Ganga was 60,000. Now as she is getting a share of 14,000 from goodwill, 15,000 from general reserves and 4,500 from revaluation, her capital account has now become 93,500 rupees. Whereas for Yamuna, it was 40,000 her investment, and she got a share of 6,000 from goodwill, 10,000 from general reserves, 3,000 from revaluation profit. So now her capital is 59,000. And the total capital of Saraswati is 50,000, and the total on debit side is nothing because they have withdrawn nothing, not there is any loss which is to be deducted from their capital account. तो ना ये लोग कुछ पैसा विथड्रॉ कर रहे, ना कुछ लॉस है जो हम कैपिटल अकाउंट से डिडक्ट करेंगे. So now the total on both the sides will be recorded as 93,500 for Ganga, 59,000 for Yamuna, and 50,000 for
सरस्वती। तब क्योंकि ये लोग ना कुछ पैसा विथड्रॉ कर रहे हैं, ना कुछ पुराने लॉसेस है जो हम पार्टनर्स कैपिटल से डिडक्ट करेंगे, तब इसकी सिर्फ बैलेंसिंग करेंगे। कैसा करेंगे? In order to make it equal to 93,500, it will be recorded as two balance carried on 93,500 for Ganga, and the same will be brought down on opposite side as by balance brought down 93,000 for Ganga. Now, in order to make it equal to 59,000 for Yamuna, it will be recorded as two balance carried on 59,000 for Yamuna capital account. The same will be brought down on opposite side as by balance brought down 59,000 for Yamuna capital account. In order to make it equal to 50,000, we'll be writing it as two balance carried on 50,000 for Saraswati. The same will be recorded on opposite side as by balance brought down 50,000 for Saraswati. Now we'll be preparing new balance sheet, the heading for which will be balance sheet of Ganga, Yamuna and Saraswati as on 31st March 2020. So in order to prepare new balance sheet, we'll be having a look of old balance sheet, then we'll be preparing new balance sheet. नई balance sheet बनाने से पहले पुरानी balance sheet सामने रखते हुए नई बैलेंस शीट बनाना है। पुरानी बैलेंस शीट में गंगा और यमुना का कैपिटल दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे? न्यू बैलेंस शीट में गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों का कैपिटल लिखेंगे। द कैपिटल बैलेंसेस आर 93,500, 59 and 50. So these will be shown as capitals: Ganga 93,500, Yamuna 59,000, Saraswati 50,000. Then after these, after writing capital accounts, we have trade creditors 20,000. इस पे कुछ एडजस्टमेंट नहीं था, तो जैसा है वैसा बताएंगे। नई बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड ट्रेड क्रेडिटर्स 20,000. Trade creditors 20,000. Then we have bills payable 10,000. इस पे भी कुछ एडजस्टमेंट नहीं था, तो जैसा है वैसा बताएंगे। लायबिलिटी साइड बिल्स पेएबल 10,000. फिर इसके बाद अपने को है आउटस्टैंडिंग रेंट 5,000. ये भी, इस पे भी कुछ एडजस्टमेंट नहीं था, तो जैसा है वैसा बताएंगे। आउटस्टैंडिंग रेंट, रेंट का मतलब किराया, आउटस्टैंडिंग रेंट का मतलब ये पे करना बाकी है। देन आफ्टर आउटस्टैंडिंग रेंट वी हैव जनरल रिजर्व्स। तो ये पैसा क्या करें हम? बांट के क्लोज कर दिए। सो अगेन दिस विल नॉट बी शोन इन न्यू बैलेंस शीट. सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड ऑल द आइटम्स व्हिच वर गिवन ऑन लायबिलिटी साइड. नाउ लेट अस हैव ए लुक ऑफ आइटम्स व्हिच वर गिवन ऑन एसेट साइड. एसेट्स में क्या दिया हुआ है? कैश 12,000. ये कब है? न्यू पार्टनर यमुना, न्यू पार्टनर सरस्वती आने से पहले गंगा और यमुना के पास 12,000 थे, बट न्यू पार्टनर आने के बाद आज ये लोगों के पास कितना पैसा है? 82,000 है। तो न्यू बैलेंस शीट में कैश बैलेंस क्या बताएंगे हम? 82,000 बताएंगे. सो ऑन एसेट साइड इट विल बी शोन एज कैश 82,000. Then after cash we have debtors 38,000, जो जिस पे कुछ भी एडजस्टमेंट दिया हुआ नहीं है. सो इट विल बी शोन एज debtors 38,000. उसके बाद इन्वेस्टमेंट जो 3,000 हम नहीं बताए वो बताएंगे. इन्वेस्टमेंट्स 3,000 रुपीज विल बी शोन. जो 3,000 अनरिकॉर्डेड था, अनरिकॉर्डेड मतलब हम उसमें लिखना भूल गए थे, अब उसको लिख रहे हैं. मतलब अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट को हम अब रिकॉर्ड कर रहे हैं. So investments will be shown as 3,000 rupees. Next, उसके बाद अपने को क्या है? स्टॉक 25,000 है, जिसपे अपने को एडजस्टमेंट है 10% कम करने का. 25,000 में से 2,500 कम करके हम उसको क्या कर रहे हैं? 23,500 पे बता रहे हैं. 25,000 माइनस 2,500, इट इज नो 23,500. नेक्स्ट, स्टॉक के बाद अपने को दूसरा आइटम क्या दिया हुआ है? फर्नीचर 40,000, जिसपे 5% कम करना है अपने को. 40 माइनस 2 38 बता रहे हैं. फिर लैंड एंड बिल्डिंग 45,000 था, जिसपे 20% अप्रिसिएशन करके 9,000 बढ़ा रहे, 54,000 बढ़ा रहे. नाउ विल बी डूइंग द टोटल ऑफ बैलेंस शीट. इट इज 90 50 plus 50 1 lakh, 1 lakh plus 90 1 lakh 90,000, 2 lakhs 220, 2 lakh 25,000, 2 lakh 34,000, 237,500, 2 lakh 37,500 on liability side. Now doing the total on asset side. 82 plus 890, 90 plus 30, 1,20,000, 1,40,000, 1,40,000, 1,90,000, 2,20,000, 2,28, 2,28, 2,32,000, 2,35,000, 2,35,000, 2,35,000, 2,35,000 plus 2,000, 2 lakh. 82 plus 890, 90 plus 30, 1,20,000, 1,40,000, 1,70,000, 1,70,000, 220, 220, 228, 232, 235, 238, 230, 230, 235, 237, 500. 82 plus 890, 1 lakh, 1,20,000, 1,40,000, 1,40,000,
20, 23, 20, it is 22,500. 82 plus 8, 90. 90 plus 3, 120, 120, 120 plus 20, 140, 140 plus 3, 143 plus 2, 145, 145, 145, 175, 175 plus 4, 179, 220, 80, 82 plus 8, 90, 90 plus 30, 120, 120 plus 20, 140, 140 plus 30, 170, 170 plus 50, 220, 170, 220, 220 plus 8, 228, 232, 234, 234, 235, 236, 237, 237, 500. So the total on both the sides is 2,37,500, 2,37,500. Hope you have understood the topic. See you all in next video. Thank you.